Hey guys, welcome to my channel. My name is Pushir and you guys are watching Mature Reactions. I welcome you all on my channel. So आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो होने वाला है एक बहुत ही टेम्पटिंग वीडियो टू दिस फूड लवर स्पेशली, क्योंकि जो लोग फूड लवर्स हैं उनके लिए एक तरह से जन्नत होती है इंडियन स्ट्रीट फूड। और अगर आप फॉरेन से आए और फॉरेनर से तो आपके लिए वो टेस्ट जो है वो एक तरह से एक्सप्लोजन हो जाता है। सो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो इसी तरह की कोई फॉरेनर है उनकी वीडियो देखने वाले हैं जिस का नाम है ओनली वन जूलिया, ये उनकी चैनल का नाम है। और जो वीडियो का टाइटल है वो है मुंबई का स्ट्रीट फूड है, तो उसका टाइटल जो है वो है आई एट ओनली स्ट्रीट फूड फॉर 24 आवर्स। और वीडियो टाइटल है आई एट ओनली मुंबई स्ट्रीट फूड फॉर 24 आवर्स। तो जैसे कि मैंने कहा इट्स वीडियो ऑफ ओनली वन जूलिया। हालांकि उनके वीडियोस जो है काफ़ी पॉपुलर है और आप में से काफ़ी लोगों ने हो सकता है कि उनके वीडियोस देखे भी हो, नहीं देखे तो आज मेरे साथ देख लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, ओरिजिनल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड या लेट्स सी द वीडियो। देखते हैं वीडियो कैसा होता है एंड देन विल डिस्कस द वीडियो। सो लेट्स डू दैट। India, you're so good at street food, like really. He's making sandwiches like you stack them dollar bills. I'm trying the traditional pav bhaji in Mumbai. Yeah! Oh my god. We are at Sardar, which is the Sardar most pav bhaji, famous very place famous one in for Mumbai. Pav bhaji. You cannot come to Mumbai and not have look at the pav butter bhaji. there. This is the street food godness of Mumbai. It was actually created here in Mumbai. What we know is that when there is a queue outside, that means the place is really good. That's true. Wow, that's so much spices, man. बट ये सिर्फ स्पाइसेस नहीं होता, बट हमको पता है कि मिर्ची, धनिया, हल्दी ये सब होता है। वो लोग सिर्फ स्पाइसेस में बताते हैं तो लगता है कि वो एक ही चीज बार बार डाल रहे हैं। This is like what That looks India tempting, is man. about. Wow, the pav is Wow. perfect. We don't find these buns in Germany. Look how creamy it is. Wow, it just melts inside your mouth. And let me be honest, I normally don't eat a lot of butter, but there is no way this would have tasted the same without butter. Look at the cream. This is like perfect. I've seen it in the making. I don't know how they calculate the amount of spices, but the combination of all the spices together with the It's vegetables, just I think experience and the tomatoes, and and the butter and the fresh coriander is perfect. I think I'm gonna need so many pounds. And I really love the fact that we are eating with the hands. You know, in Italy, this would be called scarpetta, little shoes. So when we eat pasta with a piece of bread, we finish the sauce. Bombay sandwich, again a very famous one. Close to the Marine Drive, because we really want to try the Bombay sandwich. I've seen so many amazing pictures and watched so many videos, and I really want to try it. This must be a really cool place for college students. There are many colleges on this Yeah, road, so many I youngsters asked around. them, what is the best sandwich I can get at this store? And they told me the grilled sandwich. So that's it. If the locals recommend it, we're gonna have to try it. I read that the ribs is the only bread that the best sandwich places and stores in Mumbai wanna use because it's really close to British bread. So I've seen a grilled chutney because it has a lot of cheese. Wow, it's so fast. There's a lot of butter and Julia doesn't like butter, but she got to deal with it. I like butter. It's just I don't. ये कौन था? कैमरामैन था सर। I think must be local He's guide. making I think sandwiches like you she picked stack up. them dollar bills. Smile, Wapas. Smile. That's it. I gotta try it. I've never seen so much cheese on a Whoa, sandwich. that's a huge one, man. जब बना रहे थे तो उतनी बड़ी नहीं लग रही थी। Oh my god. There is heaven inside my mouth.
It's so crispy. It's like that extra toasty effect on bread. The cheese on top, I think that's basically the cherry on top. And inside, the veggies are extremely fresh. They always tell me that in India, I have to try everything with chutney. There is no way I cannot have chutneys, so let's do it. Wow, the green chutney is just the best. Crunch is amazing. Is it a music Also, or real crunch? The Look fact at the that crunch. there's a boiled potato inside just makes it like the perfect balance between the crispy and the soft, creamy texture coming from the potato. What? There is nothing better than comfort food. This is why I miss home. This is just amazing. Like even the sandwiches are just, it's a very simple recipe. I finally feel like I'm in Mumbai now. The local taste, of course. So it's super hot now here in Mumbai, so we decided to come at THALI Juice Center, which was recommended by the college students we just saw. And I'm having this juice, which is the Mosambi juice. Let me try it. Orange juice. Wow, this is a specific type of orange, so it's the green orange that you can find here in India. It tastes citrusy, but it's way more refreshing than the normal orange, actually, I have to say. I really needed that. So this place only uses really fresh ingredients. You should definitely check it out. They have an amazing variety of juices, but I'm also gonna try something else after this. Now it's time to have the kulfi faluda. Wow, look at this presentation. I mean, presenting food is basically everything. Food can taste amazingly, but if you don't know how to present it, then people won't get That's it. a really Like, good one. this is That's really good art. presenter. I love to mess with food. That means it's super good. Wow. Basically has all the amazing Indian spices melted with a lot of cream, a super creamy ice cream. And then you have these jelly seeds plus the jelly noodles, which makes everything perfect. Whoever made this recipe is genius, let me tell you. This is an explosion of senses. There is the jelly part that is made by the noodles and the seeds, and then there is the crunchy part made by the cashew nuts, and the creamy side that is also sweet from the melted ice cream. Bhaiya, can I have a veg panini? Okay. One veg panini. Thank you. So they told me that the veg panini is extremely famous. We just gotta have it. That's panini, right? Or paneer? Oh my god, it looks like pizza on top. Yeah, looks I like don't know pizza. exactly what is inside, so I'm just gonna try it. Ooh, it's still really hot. There are so many veggies and there is paneer inside. Oh my god. Wow, they were right, like the paninis are amazing too. It feels like, you know, we have paninis in Italy too. Panini is an Italian word actually. But this feels like a mixture between a focaccia and a pizza on top. Yeah. The bun, I think it's what makes the difference, really, because it's soft inside, it's crispy outside. It's incredible, it just melts inside your mouth. Wow. India, you're so good at street food, like really incredible. I'm gonna try Thank you. with the We didn't chutney. know that. That is starting getting hot. Okay. We are at the Rahu sandwich place. Wow. They all told me to come here at the Haji Ali. the most amazing faluda. Wow, so that was a very cute video, you know, very simple, very energetic, very fun-loving, and very smiling, I think very happy video. And that's a good thing about India, you know, whenever someone visits to the India and they eat Indian food, it's like a deep satisfaction they get, because kind of a taste, kind of a food, you know, different varieties of food, different varieties of spices, and also different varieties of, I believe, different dishes, you know, they never heard of. And even the same dishes are different, like the sandwiches are different, the pani puris are different, the pav bhajis, we have hell many options of the pav bhajis as well, and the vada pav, so simple yet so creamy. I'm surprised ki vada pav is with honey. There should be there vada pav, maybe another video for, but I don't know. But
वड़ा पाव शुड बी देयर. बट एनीवे दिस इज अ वेरी गुड वीडियो. जिस तरह से कोई बाहर से आके बोलता है कि उनको पसंद आती है इंडियन स्ट्रीट फूड, हमको भी अच्छा लगता है, बिकॉज आई मीन इंडिया is known for its food, for its culture, for its hospitality. And when it comes to India, when you talk about India, the Mumbai is, I think, in the center of the food lovers. क्योंकि अगर आप मुंबई, आप कहीं पे भी रहते हो, आपके शहर में एक तो ऐसी दुकान होगी जहाँ पे मुंबई सैंडविच मिलती होगी, मुंबई पाव भाजी मिलती होगी, या मुंबई चाट मिलती होगी, मुंबई भेल मिलती होगी, बिकॉज मुंबई ने वो सब कुछ अपने अंदर संजो के रखा है. पूरी दुनिया या पूरा हिंदुस्तान अपने अपने शहर छोड़ के मुंबई में आता है, और उसके बाद जो है वो मुंबई ने उसको एक्सेप्ट किया, और उनके जो खाने पीने हैं, उनकी जो आदत है, उनको फ्यूजन बना करके पेश किया और अपने नाम से कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं. सो इट्स वेरी गुड थिंग. आई थिंक दैट्स इसीलिए मुंबई को जो है वो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि वो आप पोजीशन मेंटेन करें. ना सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ पर जो छोटे छोटे वेंडर्स है, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स है, वो भी अपनी क्रिएटिविटी इसी तरह से दिखाते हैं. जैसे कि वो पाव भाजी थी, बहुत ही खूबसूरत सरदार पाव भाजी, वेरी फेमस पाव भाजी इन मुंबई. बट लेकिन उसके अलावा जो फालूदा, कुल्फी, आइसक्रीम था, या जो भी मिल्क शेक था, या जो भी था, वो बहुत ही टेम्पटिंग था. दिखने में भी उसने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही एकदम ऐसा लगता है कि हम बोलते हैं ना कि खाने से पहले हम लोग जो है वो आंखों से एक बार उसको टेस्ट करते हैं. सो इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, तो आपको देखते ही ऐसा होता है कि हमें भी इसको खाना है. एंड दैट्स वन ऑफ द वे ऑफ मार्केटिंग थिंग्स इज वेल. एंड मुंबई इज वेरी फेमस एंड नोन फॉर दैट. और उसके अलावा आई थिंक दूसरी जो चीज़ उन्होंने खाई, वो आई थिंक एक तो जूस था. उसके अलावा सैंडविच, मुंबई सैंडविच इज़ वेरी फेमस. लेकिन वो सैंडविच जो बनी बहुत ही बड़ी, आई थिंक एक सैंडविच अगर एक बंदा तो खा ही नहीं सकता. अगर मेरे जैसा हो तो मुझे लगता है कि 2 बंदे ज़रूर चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी सैंडविच आप ख़त्म ही नहीं कर सकते. एंड दैट्स आई थिंक ब्यूटी ऑफ मुंबई, कि वो भर भर के आपको चीज़ देते हैं, भर भर के पनीर टॉपिंग्स देते हैं. उसका प्राइस जो होता है वो जस्टिफाइड होता है इन दी एंड, जब आप उसका फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं. और टेस्ट अगर आप कर ले तो आई थिंक वो तो आई थिंक मुझे लगता है कि उसका तो कोई मोल ही नहीं है. उस तरह की वो जो टेस्ट होता है वो उस तरह का होता है, क्योंकि हर जो वेंडर होता है, भले ही 2 सैंडविच वाले अगल बगल में हो, लेकिन दोनों के टेस्ट जो है वो सेम सैंडविचेस के अलग अलग होंगे, और दोनों के फिक्स जो है वो कस्टमर होंगे. उसी तरह से हर जगह पे ऐसा होता है. मुंबई में स्पेशली बात करें कि आप कितने पाव भाजी की जगह होगी, कितने पानी पूरी की जगह होगी, वड़ा पाव की कितनी जगह होगी, लेकिन हर एक के अपने फिक्स कस्टमर होते हैं, और उनको उन्हीं का टेस्ट जो है पसंद आता है. सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ मुंबई एज वेल. सो या आई थिंक that's it. I think wonderful video by only one Giulia, and बहुत ही अच्छा लगा जब कोई कहता है कि आई एट ओनली मुंबई स्ट्रीट फूड फॉर 24 आवर्स. आई थिंक सुनने में जो है वो थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन जब आपके पास इतने खूबसूरत, इतने टेस्टी खाना पीना हो, तो मुझे लगता है कि कोई भी उसके ऊपर सर्वाइव ज़रूर कर सकता है. सो या गाइज, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. इसी तरह का आपके पास कोई भी वीडियो हो, रिकमेंडेशन हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा. और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके सुझाव मैं हमेशा वेलकम करता हूँ. तो मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है कि कोई आए, कोई कुछ बताए, और उनको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताए. सो उसी नोट पे गाइज इस वीडियो को एंड करते हैं. मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, अगले रिएक्शन में. तब तक के लिए यू गाइज प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली. अगर ये वीडियो पसंद आया है और ये चैनल पसंद आया, मेरा रिएक्शन पसंद आया, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. यू गाइज प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली. आई विल सी यू अगेन. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.